Hi everyone, good evening to the YouTube channel of Pratham Test Prep. I hope all of you are doing well and you have enjoyed the festivities with full energy and enthusiasm. So let's start. Welcome back first of all. So yes, as we have already said कि बहुत energy और बहुत festivities आपने बहुत energy के साथ celebrate किए होंगे, but we should not be forgetting that we have our term one boards very near. They are just around the corner and you have to be super prepared for that. And yes, continuing to what we had started, I think 1 or 1.5 months back, that is the series for term one, specifically for class 11th and 12th, right? So continuing to that, let's move on to the topic poverty. So now we are continuing after 1 week. So we didn't had any sessions in the last week. We just had one session on Monday in the last week wherein we discussed the practice paper, right? The practice paper for term one. So I hope you've watched that video by now. And if not, please go to the YouTube channel of Pratham Test Prep, and there just search on in the playlist section, just search CBSE Economics Special, and there you'll find that particular video. Apart from that, one more thing I want to address over here is that we are left with two topics, right? So this is one topic, and another topic we are left with, that is human capital formation, and that will be the last topic for economics for class term one CBSE, right? So human capital formation will probably do on Friday, because by now you all must be aware that on Mondays and Fridays we have session for class 12th at 9 p.m. right? So on Friday, we'll be doing human capital formation. And after that, in the following week, or let's say in the next week, we will be solving two sample papers or two practice papers. So make sure you tune in, you subscribe to Pratham Test Prep's channel so that you get notified whenever we are going live with those sample papers, right? We have got a very good response with the first sample paper practice. So yes, looking forward to the similar or even more response for the second and third papers too, right? So yeah, without wasting too much of your time, let's quickly get started with this video. That is, topic is poverty. It's pretty simple, बहुत simple सा आपका topic है ये. Poverty topic है from part B, basically, that is Indian economic development. And as I have already mentioned, that this is the second last topic for term one boards, right? So let's quickly move into that. Poverty, poor, ये सारी चीजों के बारे में we'll discuss. And let me tell you now that what is actually poverty, right? So poverty basically है क्या? It is that state जहां पर हम बोलते हैं ना कि 3 basic necessities of life क्या थी, right? 3 basic necessities of life आप सबने सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान, right? So these are the 3 basic necessities of life. But apart from that, two more you can say things are added, that is health and education. So basically there are 5 necessities of life, that is roti kapda makan, education and health. Food, clothing, shelter or housing, education and health. So whenever a person is unable to fulfill these 5 basic or essential necessities, right? Whenever a person is not able to fulfill these 5 basic necessities or basic essentials of life, that is food, clothing, shelter, health and education, in that state we say that a person is poor or a person is going through a state of poverty, right? So that is basically the definition of poverty, wherein it refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life. Those are food, clothing, shelter, housing, education and health, right? Now, आपने एक term बहुत ज़्यादा सुना होगा और आपने इस term से बहुत काफी go through होगा, that who are considered as non-poor, या फिर आप बोल सकते हो कि एक non-poor term है. So quickly let me tell you what is non-poor term. Non-poor term is जिन्होंने कभी poverty देखी नहीं, या फिर जो कभी भी ये poverty वाला जो stage है, as in रोटी कपड़ा मकान, education and health, इस वाले stage से कभी deprived नहीं हुए. So those people are termed as non-poor. But let me tell you कि we have a 2-3 categorization of poverty as well,
राइट. हमारे पास पॉवर्टी का कैटेगराइजेशन भी है, of which I'll be telling you in the coming slides. But right now, let me tell you that what are the characteristics of poor people, right? So first of all, if you are unable to fulfill the basic amenities in the form of food, as in अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है time पे, if somebody is hungry, somebody is starving, right? So that is one characteristic of being poor. Second is poor health. So when you see these characteristics, somewhere or the other, these characteristics are related to the basic amenities, right? Then debt trap. What is debt trap? बहुत ज्यादा कर्जा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोन्स एंड ऑल ले रखे हैं. डेट ट्रैप में अगर कोई बंदा है, देन वी से दैट अ पर्सन इज पुअर. नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन इज अनएजुकेटेड, एज इन he or she lacks the literally skills, तब we say that a person is poor. That is one of the characteristics of a poor person, right? Last sized family is another characteristic of poor people, because the thing is that when you have a last sized family, you're not able to, or itna zyada nahi ho pata hai so that it could suffice the needs of all the people, right? So that is also one of the characteristics of a poor person. Okay. Then you have a lack of access to basic amenities, that is basic essentials, food, clothing, shelter. Then you have health and education, uska lack hai, wo aapki cheez hai. Gender inequality is another characteristic of poor people, ki aapka gender equality nahi hai, it is gender inequality is there. Poor health is next, and forced to borrow from money lenders at high rate of interest. So you must have noticed कि जो भी poor people होते हैं, so they are forced to borrow money from money lenders, because उनको जो formal financial institutions होते हैं, they don't give them the loan, because obviously loan देने के लिए there should be some collateral, there should be some security, but they don't have that. So what they go for the informal sources, right? They go for the informal sources, wherein what they do, they borrow the money at high rate of interest from the money lender. So these are the characteristics of poor people. Ayush says, ma'am, please do a session on MCQs of all the chapters. Ayush, we, as you are aware, I'm sure that you must be aware by now, that in the next week, because today is Monday, wherein we'll be covering poverty, on Friday we'll be covering human capital formation, right? And with that topic, we're done with the term 1 syllabus, correct? So in the next week, what we'll be doing, we will be basically going through the practice papers, wherein we'll be solving mixed questions from all the chapters which are coming, right? So guys, please do give this video a thumbs up so that it motivates us. Give this video like, hit the like button, so that it basically motivates us to come up with many more videos, right? So yes, moving further, we have the next slide, wherein let's see that what is actually poverty line. आपने सुना होगा कि poverty line में क्या, whenever a person is, आप poverty line से भी आप एक चीज देखते हो कि क्या ये बंदा above poverty line है, जिसको हम APL बोलते हैं, या फिर below poverty line है, जिसको हम BPL बोलते हैं. But ये actually poverty line है क्या, right? That is one thing कि poverty line में actually है क्या. So there are several characteristics, या फिर there are several measures through which ये जो poverty line है, ये आपका measure किया जाता है. एक इसका मेजर ये है, या एक वे ये है, गवर्नमेंट आपका देखता है कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर किसी भी कंज्यूमर का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का कितना है, टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन. सो MPCE, दैट इज मंथली पर कैपिटा इनकम, क्या है, तो गवर्नमेंट ने वो सेट कर रखा है, उससे आप पॉवर्टी लाइन को मेजर कर सकते हो. दूसरा जो पॉवर्टी लाइन का मेजर है, वो है आपका कैलोरी इनटेक का, राइट, कि कितना कैलोरी इनटेक हो रहा है, एंड दैट टू रूरल और अर्बन एरिया पे डिपेंड करता है, राइट. सो कैलोरी इनटेक का जो आपका है मेजरमेंट, या फिर कैलोरी इनटेक का जो आपका वे है फॉर डिस्क्राइबिंग और फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, उसमें आपका क्या है कि अगर आप अर्बन एरिया से हो, देयर इन अ पर्सन रिक्वायर्स 2100 कैलोरीज, 2100 calories per day for a person in urban areas, whereas rural areas में 2400, that is 2400 calories requirement होती है in the rural areas. Now you need to be sure that you must ask, ma'am,
अर्बन एरियाज में कम क्यों, रूरल एरियाज में ज्यादा क्यों? द रीजन इज रूरल एरियाज में क्या है, हर चीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, उतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो ड्रेन आउट होती है, सो यू रिक्वायर मोर कैलोरीज, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज 2011 एंड 12 में आपका जो कैलोरी इनटेक है, या फिर 2011 एंड 12 में आपका जो पॉवर्टी लाइन है वो आपका रुपीस के टर्म्स में भी आपका मेजर किया गया था, वेयर इन उसमें बताया था कि अर्बन एरियाज में अगर कोई बंदा 1000 रुपए कमा रहा है एज अ मॉनेटरी वैल्यू, राइट, एंड रूरल एरियाज में अगर कोई बंदा 816 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है तो वो आपका क्या है, वो आपका पॉवर्टी लाइन में आता है। अर्बन एरिया में कितना, 1000 रुपीज एज अ मॉनेटरी वैल्यू फॉर मिनिमम कैलोरी इनटेक, and rural areas में it is 816. Of course it varies, why? Because rural area उतना ज़्यादा expensive नहीं होता, it is quite inexpensive, so less monetary value for that, right? So these are few measures by which we can actually go about the poverty line, and the government actually sees ki, okay, so and so is below poverty line, that is BPL person, or above poverty line, that is APL person, right? Now moving further we have, अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जाते हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर देखते हैं, राइट, ये तो आपका हो गया कैलोरी इनटेक हो गया, मॉनेटरी वैल्यू हो गया, आपका गवर्नमेंट ने जो पर मंथली पर कैपिटा आपका एक्सपेंडिचर बता दिया, वो सब बता दिया। लेकिन इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर में आप किसको पुअर डिफाइन करोगे? तो वो बहुत ज्यादा वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, दैट व्हाट डज दैट पर्टिकुलर पर्सन डू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स। एक तो ऑक्यूपेशन और एक ओनरशिप ऑफ एसेट्स। पहली चीज क्या, कि बंदा क्या काम करता है, उससे डिस्क्राइब होता है कि वेदर ही इज पुअर और नॉट, वेदर ही इज अ रूरल पुअर और अर्बन पुअर, और दूसरा क्या है कि उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं। So उसके basis पे we have categorized poor into two categories, that is we have rural poor and then we have urban poor. आपने अगर एक चीज नोटिस की होगी, मैंने जो लास्ट स्लाइड में आपको पॉवर्टी लाइन बताया था, there also I mentioned that आपका रूरल एरियाज में अलग है कैलोरी इनटेक, अर्बन में अलग है। रूरल का पर मंथ आपका इनकम जो है वो अलग है, अर्बन में अलग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बिकॉज देयर आर सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच डू अफेक्ट द पॉवर्टी लाइन, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेसिकली ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप of assets, they play a huge role to describe whether a person is rural poor or a person is urban poor. So let's see that who all are rural poor. पहला है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वो लेबर, वो एग्रीकल्चरल लेबरर, वो फार्मर्स, वो पेजेंट जो लैंडलेस है, जिनके पास कोई लैंड नहीं है, सो वो आपके रूरल पुअर्स के कैटेगरी में आएंगे। दूसरा आपके रूरल पुअर्स क्या है, पीपल हु कल्टिवेट ऑन वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अगर आपने देखा होगा कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में जो भी कल्टिवेटर्स, पेजेंट्स, फार्मर्स जो काम करते हैं, अपना क्रॉप कल्टिवेट करते हैं, वो भी आपके रूरल पुअर्स में आएंगे। Next is वो लैंडलेस लेबरर्स हु आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब। आपने देखा है कि बहुत सारे रूरल एरियाज में, सारे के सारे आप रूरल एरियाज में देखो, not all people engage themselves in agricultural activities, right? So people engage themselves in non-agricultural activities too. Hi Pooja. So non-agricultural activities like you can say a mason, right? आपको वो you can say a carpenter, ठीक है, etc. barber, right? non agricultural activities, non agricultural jobs में भी बहुत सारे लोग क्या है वो engaged है, and not everybody is a landless laborer. Then next is a tenant cultivator with small land holdings. So tenant cultivator is people, आपने देखा होगा कि लोग अपना लैंड दे देते हैं कि आप कल्टिवेशन करो, सब कुछ करो, बट दे विल बी टेकिंग द प्रॉफिट। सो जो टेनेंट कल्टिवेटर्स हैं, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में जो आपके कल्टिवेशन करते हैं, those also comes in the category of rural poor. Now on the contrary, what is urban poor? Urban poor में आप बोल सकते हो कि वो लोग आते हैं जो बहुत सारे कैजुअल जॉब्स करते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि
they just engage themselves, let's say किसी भी वर्कशॉप में एज ए मैकेनिक की तरह वो लोग काम कर लेते हैं, राइट, जस्ट द कैजुअल जॉब्स, राइट। तो वो है, वो डू अ वेराइटी ऑफ कैजुअल जॉब्स, मतलब दिन में कुछ और शाम में वो डबल शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, राइट। नाउ यू कैन से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ गेटिंग अ बेटर लाइवलीहुड। बट वहां पर ये जो माइग्रेशन था, उस माइग्रेशन की वजह से भी फर्क सिर्फ इतना पड़ा दैट वो रूरल पुअर से अर्बन पुअर बन गए, बिकॉज दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, राइट, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड। सो वो आपके किस में आते हैं, वो आपके आते हैं अर्बन पुअर में। नाउ आपके कुछ अर्बन पुअर्स कौन कौन से होते हैं, आपने देखा होगा सिग्नल्स पर बहुत सारे लोग छोटी छोटी सी चीजें आप सेल करते हुए देख सकते हो, दैट दीज डेज दे आर सेलिंग मास्क। earlier they used to sell like pens, और आपका जो विंडोज पे लगाने के लिए जो एक वो the I don't actually know what it is called, but वो लोग सेल करते हैं on signals, right? So ये सारी चीजें आपने देखी हैं that people do that, okay? So ये एक वो self employed लोग हैं who do a variety of things and they are engaged in various activities. So ये सारे people are known as urban poor, right? Now moving further, we have टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अगर मैं आपको पॉवर्टी की बात बताती हूँ, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि पॉवर्टी क्या है, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टीज। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। अब दोनों ही वर्ड्स आपने काफी बारी सुने होंगे, बट व्हाट आर एक्चुअली दीज टू वर्ड्स, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी? आप सिंपल सी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ दैट अगर कोई बंदा, if a person is unable to fulfill even the absolute basic necessities of life, right, that is what, that is food, clothing, shelter or housing, education and health, okay? So if a person is not able to fulfill the absolute basic poverties of life, तो वो कौन सी टाइप की पॉवर्टी होगी, वो होगी आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट? जब आपका लेवल ऑफ इनकम इतना ज्यादा कम है wherein a person is not even able to fulfill the absolute basic essentials or absolute basic consumption of the needs and wants and the requirement, तो वो क्या है आपका, वो आता है आपका absolute poverty में, right? आप definition में देखो, it says when the level of income of a country is so low that people cannot even meet their basic consumption requirement to maintain their health and work efficiency is known as what? It is known as absolute poverty. And yes में जो लोग होते हैं वो क्या लोग होते हैं? These people are known as absolute poor, right? लेकिन आपका एक और टाइप का पॉवर्टी होता है, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉवर्टी, दैट इज अ कंपैरिजन। अब आप क्या करते हो, एट टाइम्स वी डू कंपेयर वन कंट्री और सम पीपल टू अदर पीपल और अदर कंट्रीज। एज इन मैं आपको बताती हूँ, देयर इज अ सेक्शन वेयर इन एक सेक्शन ऑफ पीपल जो है वो कम अर्न करते हैं कंपेयर टू the other section, right? So relatively when they're earning less from other party, in that case it is known as what? It is known as the relative poverty, जहां पर आपका relative comparison है, okay? जहां पर आपका relatively you compare and in the comparison one person is earning less than the other, in that case it is known as what? It is known as relative poverty. Then what is relative poverty? When we compare the incomes of different people and find that some people are more poor as compared to others, in that case it is relative poverty. बहुत simple है, absolute basic necessities अगर fulfill नहीं हो पा रही, then it comes under absolute poverty. And when you compare, so relatively जो भी आपका ज़्यादा poor होगा, that would come under relative poverty, right? Now moving further, we have categorization of poverty or poor, right? आपने अगर नोटिस किया होगा कुछ टाइप के पुअर्स होते हैं, नॉट एवरीबडी इज पुअर, ऐसा नहीं है, राइट? आपने कुछ देखा होगा, एक है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है, वो आपने जैसे उनको देखा, मतलब दीज पीपल आर लाइक कि दे ट्राई टू अर्न मोर मनी, राइट? कभी कभी उनको ज्यादा पैसा मिल जाता है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें मेजर टाइम पर दे रिमेन पुअर, दे आर ऑलवेज पुअर, दे आर यूजुअली पुअर। इन दैट केस वी से दैट द पर्सन इज क्रॉनिक पुअर। वो कौन है? दैट
people who are always poor or who are usually poor, for example the casual workers, right? कभी कुछ काम कर लिया, कभी कुछ काम कर लिया, तो chronic poverty वो होती है, या chronic poors वो होते हैं, right? दूसरा टाइप का पॉवर्टी है, ये दूसरे टाइप के पुअर्स हैं आपके ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आपके सीजनल फार्मर्स हो गए या सीजनल वर्कर्स हो गए। फार्म कल्टीवेशन का सीजन होता है, राइट? कि मान लो जब आपका व्हीट का सीजन है तो उस टाइम पर तो दे हैव एम्प्लॉयमेंट, बट जैसे ही सीजन खत्म हो जाता है वापस से अनएम्प्लॉयड हो गए, राइट? तो जो लोग बार बार मूव करते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं फ्रॉम पॉवर्टी एंड नो पॉवर्टी, उस केस में क्या बोला जाता है? दीज पीपल आर नोन एज ट्रांजिएंट पुअर who regularly move in and out of poverty। जैसे आपके फार्मर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए, they just move in and out of poverty। जैसे कि आपका क्या है, आपका अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे राइस, व्हीट, मेज, जो भी है, सीजन खत्म हुआ, जॉब खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, दे जस्ट गेट इनटू पॉवर्टी अगेन। बाकी टाइम पे दे आर एक्सक्यूज मी, they are out of poverty, right? Now the third category is occasionally poor। as the name suggests, occasionally poor are people जो occasionally ही आपके poverty में आते हैं, as in आपका let's say bad luck आ गया। most of the time they are above poverty line, most of the time they are rich, but कभी कभार they just have a patch of bad luck, and then these people are known as occasionally poor, right? So these includes who are rich most of the time but have a difficult patch sometimes, so we term these people as occasionally poor people. So it's very easy. We have three types of people, we have three types of poverty: chronic poverty or chronic poor, transient poverty, transient poor, and occasional poverty, occasional poor। okay, now अब आप लोग सोच सकते हो कि okay, हमने बहुत पॉवर्टी की बात कर ली, what is the government doing, right? गवर्नमेंट कुछ तो कर रही होगी टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री, बिकॉज किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहे, राइट? सो गवर्नमेंट की जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी है उसमें 3 डायमेंशंस आपके होते हैं। पहला जो डायमेंशन है वो ये है कि गवर्नमेंट आपका प्रमोट करता है, चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो। आप सिंपल सी चीज समझो, जब मैक्रो लेवल पर, जब ऑन अ मैक्रो लेवल ग्रोथ होगा, ऑब्वियसली इट वुड इंक्लूड द इंटायर इकोनॉमी, द पीपल ऑफ इंटायर इकोनॉमी, राइट? तो अगर आप मैक्रो लेवल पर ही आप बूस्ट कर रहे हो ग्रोथ को, आप मैक्रो लेवल पर ही इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हो, डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हो, सो इट विल ऑटोमेटिकली डू व्हाट? इट विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द people, right? And especially the economic condition, and जो आपका poverty है वो थोड़ा सा और slightly कम हो जाएगा। So that is the first dimension in promoting the economic growth। सेकेंड डायमेंशन जो गवर्नमेंट का है वो है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, मनरेगा, राइट? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राइट? मनरेगा प्रोग्राम क्या करता है? बेसिकली वो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपको देता है। सो ये आपका, दिस इज वन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वेयर इन गवर्नमेंट डायरेक्टली टारगेट करती है, पुअर्स को डायरेक्टली टारगेट करती है ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, एंड वो क्या करती है? उनको एम्प्लॉयमेंट देती है सो दैट दे अर्न, दे कम आउट ऑफ पॉवर्टी स्टेट, राइट? Third dimension है in which the government work actually to remove the poverty from its economy is provision of basic minimum needs, right? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपके गवर्नमेंट के चलते हैं, कुछ ऐसे आप बोल सकते हो स्कीम्स गवर्नमेंट की चलती हैं, जहां पर क्या है? आपका गवर्नमेंट दे डायरेक्टली टारगेट, दे डायरेक्टली अटैक ऑन टू द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। स्कूल्स में, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील चलता है, राइट? मिड डे मील स्कीम चलती है आपकी। वो क्या है कि बच्चा जो भी आपका स्कूल में आ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बच्चा आपका आ रहा है, तो उसको सरकार जो है वो आपका क्या देती है? वो आपका मिड डे मील देती है, उसको लंच टाइम में स्कूल से ही खाना मिलता है। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट, राइट? सो ये एक है जहां पर गवर्नमेंट डायरेक्टली अटैक कहाँ कर रही है, डायरेक्टली कहाँ टारगेट कर रही है on fulfilling the minimum basic needs, right? उसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
आपका है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज पीडीएस। आपने देखा होगा लोगों के कार्ड्स बनते हैं, एपीएल कार्ड हो गया, बीपीएल कार्ड हो गया, राइट। अभी तो खैर वन नेशन वन कार्ड स्कीम आ गई है आपकी, बट ये आपके कार्ड्स भी आपके बनते हैं। पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली वो आपका बहुत ही कंसेशन रेट पे, बहुत ही कम प्राइस पे आपकी जो बेसिक आइटम्स है, बेसिक एसेंशियल्स है, लाइक शुगर, लाइक राइस और व्हीट और केरोसिन, राइट, ऑयल, ये चीज आपकी गवर्नमेंट जो है वो देती है। आपकी कंसेशन रेट पर आपकी गैस सिलेंडर्स मिलते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल व्हाट, ये सारा गवर्नमेंट कर रही है, डायरेक्टली टारगेट कर रही है ऑन द पुअर्स, राइट। वहां पर वो डायरेक्टली टारगेट कर रही है सो दैट उनका जो बेसिक नीड्स है एटलीस्ट वो फुलफिल होते रहे। सो these are some of the ways wherein the government is these are the three dimensions basically which are actually running by the government in the anti poverty strategy, right? तो anti poverty strategy में ये तीन dimensions है, and इन्हीं के तीन dimensions के within आपका क्या होता है, आपके जो programs हैं, जो schemes है, वो आपका चलते हैं, right? उसी से आपका डायरेक्टली आप बोल सकते हो, जैसे मिड डे मील से हो गया, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हो गया, उसी तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा हो गया, आपका सेम वे से आपका हेल्थ एजुकेशन, हर किसी के लिए गवर्नमेंट हैज स्कीम्स एंड programs. On the next slide, I'll tell you that what are those schemes and programs which are run by the government as a measure to remove poverty from the country, right? So on this particular slide, you will see 7-8 schemes and programs. I won't be getting into the depth of it because जैसे आप name पढ़ोगे आपको idea मिल जाएगा that what is the objective of that scheme or program. मनरेगा के मैंने आपको पहले ही बता दिया था, that is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसको present date is also known as the दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, right? It is known as the दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना. इसमें क्या है, आपका 100 डेज का गारंटीड आपका एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर एक जन को 100 डेज के लिए रखा जाएगा एंड वहां पे दे विल गेट पेड, राइट. दूसरा है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ये भी आपका क्या है कि रूरल एरियाज में स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोग सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हो. सो ये आपका एक प्रोग्राम है. नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. ये जो आपका है, ये है आपका एडुकेटेड यूथ के लिए, है ना, जिनका लो इनकम है फैमिली की, उन लोगों के लिए है. रूरल अर्बन एरिया दोनों में ये चलता है. इट इज नॉट स्पेसिफिक ओनली टू द रूरल एरिया सिंस इट इज अ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सो इट इज फॉर एवरीबडी. कि गवर्नमेंट से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है, दे वांट टू सेट अप एनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. ये जैसे आपका नाम से ही है, दिस इज फॉर द अर्बन एरियाज, राइट. दिस इज बेसिकली फॉर द अर्बन एरियाज. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. इसके साथ साथ आपकी एक ग्राम स्वरोजगार योजना भी है विच इज बेसिकली फॉर द रूरल एरियाज, जहां पर आपने सुना होगा एसएचजीज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं आपके. देन आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM. देन यू हैव नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, दैट इज NULM. इनके डेप्थ में आपको नहीं जाना है, यू शुड बी नोइंग ओनली द नेम्स ऑफ दीस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. एंड अगर आपको नाम ही पता होगा, नाम से आप बहुत इजिली समझ पाओगे that what is actually the aim or the major aim or objective of that. Next we have is National Food for Work Program, that is NFWP, wherein जो भी आपके unskilled workers हैं, जो manual work कर सकते हैं, right, उनको क्या है, this is for basically the rural poor, जो आपका unskilled है, उनको ऐसा कुछ skill नहीं पता, but still they can do any work, वो कोई भी काम कर सकते हैं, उनको वेज चाहिए, उनको पैसा चाहिए, राइट. और वो कोई भी काम है वो उसके लिए करने को रेडी है. सो फॉर दैट वी हैव नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम. देन वी हैव द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, दैट इज NSAP. ये आपका है बेसिकली ओल्ड एज पीपल के लिए, डिसेबल्ड के लिए एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए. उनको सोशल सिक्योरिटी देना है, उनको आपका फाइनेंशियली थोड़ा सा सिक्योरिटी देना, उनके लिए वी हैव NSAP, दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. एंड देन वी हैव संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. ये आपका कंप्लीटली है फॉर द रूरल एरियाज, ठीक है. यहाँ पर आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एज इन ये आपका रूरल एरियाज में जैसे आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर
कुछ करवाना है, लाइक रोड्स करवाने हैं, कहीं पर कुछ वेल्स का रेनोवेट करवाना है या कंस्ट्रक्शन करवाना है, राइट, रिवर बैंक्स पर कुछ करवाना है, तो वहां पर आपका क्या है, ऑब्वियसली द रूरल लेबर वुड बी बेटर, राइट, क्योंकि उनको क्या है, एक तो प्रोजेक्ट आपका हो गया, ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस का बाय दैट प्रोजेक्ट, एंड ऑल्सो आपका क्या है, आपका जो आपके नॉर्मल जो आसपास के जो लोग हैं, राइट, वो एज अ लेबरर्स काम करके दे कैन गेट सम wages. So these are few of the poverty alleviation programs which are currently run by the government of India, right? उसके अलावा हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था. नाउ इसका एक क्रिटिकल असेसमेंट है जिससे आई क्विकली टेक यू थ्रू. एरिया ऑफ कंसर्न क्या है कि ये स्कीम्स हैं, तो आपके सो वी हैव टू थिंग्स कि एक तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, एरिया ऑफ कंसर्न्स कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू deal with these problems, right? So what are the problems and what are the solutions of the same? प्रॉब्लम है आपका ये जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है, बेसिकली इनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं, जैसे कि आपका लैंड हो गया, बाकी एसेट्स हो गए. अगर आप देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी अगर हम देखते हैं, जो आपका पीडीएस सिस्टम है, नॉट एवरीबडी गेट्स इक्वल items, right? Equal essentials. Not everybody gets that, right? तो एक unequal distribution है, that is a problem. Second is प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, स्कीम्स बहुत सारी हैं हमारे पास, बट रिसोर्सेज उतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं है. वी हैव insufficient resources, so we don't have sufficient resources. That is also one of the major problem. And lastly, we have the scheme, we have the idea, but the problem lies in the proper implementation and proper execution of the scheme or the idea, right? That is the one major thing कि implementation का issue है. People are not motivated and they have the issue of proper execution of any scheme or any program, right? अब आपका क्या आता है, अब हम देखते हैं कि अच्छा ये तो हमारे प्रॉब्लम्स है, what are the solutions of these? Okay, इन सबके सॉल्यूशन क्या है? पहला है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर. एट टाइम्स क्या होता है कि जिनके लिए स्कीम बनाई गई है, जिनके लिए आपके ये आप कह सकते हो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, बेसिकली उन्हीं को नहीं पता है कि उनके लिए कुछ ऐसा है भी. सो पुअर्स आर नॉट पार्टिसिपेटेड, पुअर्स आर नॉट अवेयर. आप बोल सकते हो अनअवेयर हैं, राइट? दो दीज पीपल आर नॉट अवेयर. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर डेवलपमेंट हो, जैसे अगर आप बोल सकते हो कि अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेटा ये जगह है एंड यहाँ पर विल बी टेकिंग थ्रू दैट, तो things can get properly implemented and executed. And last is social mobilization and empowerment of the people. People empowered, who people should know, जो privileged लोग हैं. When I say privileged, I mean people who are not in under the poverty line. जो privileged लोग हैं, right? वो एक साथ मिलकर आगे आए and they should have empowerment, social mobilization हो, right? तो इससे ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, और या बोल सकते हो जो एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं फॉर बेसिकली दीस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, दे कैन बी रिजॉल्व्ड, राइट? So with this, we have actually covered all the topics, subtopics for the topic poverty, which are important for you for term 1, right? Now, what I would suggest you to please give this video a big thumbs up, right? So that, of course, we can come up with many more videos. We get motivated, we get come up with many more videos of such. And apart from that, I wish you all the very best, for because I have heard that some schools they are going on with some boards and midterms. ये आपके चल रहे हैं, थोड़े tests चल रहे हैं, which are actually preparing you. So yes, having said that, let's wind up today's session. Thank you so much for joining us, for tuning to Pratham Test Prep, and we'll be meeting super soon in our next session, that is on Friday at 9 p.m. And topic मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ, it is human capital formation, the last topic for the term 1 for class 12. And with this, let me tell you that just keep smiling and yes, keep revising. Subscribe to Pratham Test Prep's channel, and all the very best for your tests, for your exams and entrances. Thank you so much guys for staying with us. Bye bye, take care.